Hello, Namaskar, and a very good evening to all the viewers watching our session out there. This is Simran Singh, and you are watching this particular live telecast of NCERT on eVidya channel number 6 to 12. Besides, we have so many different mediums through which you all can connect with us and you can participate in our live interactive sessions by commenting in the comment section of our YouTube channel that you all are well versed with. It is NCERT official. So it's around 5 p.m. on your watch, and from Monday to Friday at this particular timing, that is from 5 till 5:30, we have our very special sessions for all our viewers. We call them Sahyog, where we try to provide guidance for mental well-being and psychosocial support to all the students, learners and viewers watching our sessions out there. So you must be willing to know what is the area or the topic that we are going to discuss in today's conversation. It is all about developing concentration and study skills. तो आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं और क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो अपने स्टडी स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं. तो एग्जामिनेशंस पर बातचीत चल रही है. आई हैव अनदर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स. एज यू ऑल नो दैट इन येट अनदर एक्साइटिंग एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will interact with students, teachers and parents on 27th of January 2023. So let's listen to the experiences of our Prime Minister और ये जानते हैं कि किस तरह से तनाव रहित होकर अपनी परीक्षाओं को हम एक उत्सव के रूप में देख सकते हैं और एक उत्सव की तरह ही उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो चलिए आज की जो हमारा सत्र है उस पर बातचीत करते हैं जिसमें डेवलपिंग कॉन्सेंट्रेशन और स्टडी स्किल्स पर हम आपको और जानकारी प्रदान करने वाले हैं. So let me also introduce you to the guest for today's Sahyog session. Here we have with us Dr. M.S. Kariyappa sir. Namaskar sir. Namaste madam. Welcome to the conversation. Sir is from RI Bhopal, NCERT. Then we also have with us our practicing counselor for the day, Mr. Kailash Singh Chaudhary. Namaskar sir. नमस्कार. आपका भी इस्तकबाल है सर आज के इस सत्र में. And during this live interactive session, viewers, if you have any of the queries, then of course you can mention it in the comment section of NCERT official. Besides, here is our contact number that is flashing on your screens. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. इसे नोट डाउन कर लीजिए. हमारा नंबर है 8800440559 और सहयोग के सत्र से जुड़ी हुई हमारी आधिकारिक मेल आईडी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. sahyog.ncert@cret.nic.in. So let's begin our conversation on developing concentration and enhancing our study skills. So in the first place, we have our first question directed for Dr. Kariyappa. So what is the role of study skills and concentration that is required to meet the preparation for our examinations? Yes, madam. So good evening to one and all the viewers, and also happy National Youth Day. So this is I think this is like a proud day to celebrate also Swami Vivekananda's birth anniversary. Thank you. First of all, if you talk about an examinations, I think so many students and many of the students we used to see that means I have studied much, but even I am unable to present the system or I am unable to present in the people. And we can see that so many parents even nowadays also used to see that. So my child is not concentrating on studies, or differently we used to hear this voice. Most of the parents and most of the children having this. So what exactly this concentration? What exactly concentration speaks here? So especially the examination pattern and examination system, what exactly is requirement of this? So I think normally we say that if you study well, it's going to be. But the students are spending a lot of time on the studies, but where they are missing it. So there we can see that we can have some lack, or we can get less concentration, or otherwise medium concentration or high concentration. So there is a major role is plays a concentration on studies. So what kind of concentration speaks here? So if I talk about here, concentration is nothing but an ability to focus the mind on what we are going to do. So maybe while you are learning, or while you are doing any work, or while we are doing some activities. So what amount of focus we do that? So that's why so many times we used to talk about the 3H. So heart,
head and hand. So like when you have these all kind of coordinations, so that indirectly behind it talks about the concentration level, or otherwise how much you focused on that activity. Maybe the every student or every exam aspirant, or otherwise those who are people are preparing for the examinations, please need to be think about these. The most important point is that, so where the ability, or otherwise how far we concentrating on the particular doing activity, either maybe a learning, or maybe a listening to the teacher, or maybe a doing some activity for the purpose of next. So thus if you talk about all these things, there are the so many things if you are there. So as need to be keep in mind, every learner need to be concentrate with some kind of, in the sense like learning moment is going to be a targeted, so the area is also a matters. So like that how concentration has affecting them learning too much. So if you talk about in this academical or lower academical achievements, or depends on their concentration on the studies, and based on that there we can see that. So if you see this, so what are the distractions, or whatever the problems we are getting to be not concentrating on our work. So when you talk about this, there are the so many things are there. So what kind of an idea we have, what kind of feeling we have against, or for example imagine if I feel good at our mathematics, if my subject is like, or I'm going to like very much liking subject, if I'm going to read, means there the concentration different. So if I'm hesitate subject, if I'm going to read, my concentration is again the matters here. So for example if you feel such kind of distractions, please have some kind of techniques. So definitely we are going to discuss about that. So we can see that in a study, skills and concentration has a big role to be coordinate and has to be go further. So definitely we can see that the concentration, or if you talk about in this, so how it is going to be helpful for us. So concentration is going to be more helpful to study and learn very comprehensively. So if you are anybody want a comprehensive or complete understanding of the concept, a complete understanding of the situation, that activity, so we need some amount, or otherwise some amount of concentration is very pleasant. Next, if you want more effective in that, efficiency in that concept you are going to learn, or activity you are going to do, definitely concentration plays a major role. So then if you the children are focused, that's why the ability of focus is the most part of a role of concentration. So this way you can find out the concentration in a learning activity is the most important role. Yes, madam. Thank you so much for elaborating to our viewers more about study skills and why developing concentration is important. तो चलिए आज की इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर भी मौजूद हैं. हम कैलाश सर से जानना चाहेंगे, सर जब हम परीक्षाओं की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी तैयारी किस तरह की है. इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि स्टडी स्किल्स के सही मायने क्या हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, और क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमारे सभी स्टूडेंट्स अपना सकते हैं, खास तौर पर एग्जामिनेशन के समय पर. बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है. जैसे कि टीचिंग एक स्किल है, अगर एक स्किल टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, इसी बच्चे के पास भी स्किल होना चाहिए कि उसे स्टडी कैसे करना है. ये बहुत जरूरी है, और आज के सिलेबस में ये चीज़ें मिसिंग हो रही है, बच्चे स्टडी कैसे करें. तो मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगा जो स्ट्रेटजीज हैं स्टडी स्किल को लेकर के. जैसे बच्चों को समय पर सोना है और समय पर उठना है. उनकी मतलब कंप्लीट नींद होना बहुत जरूरी है. अगर भरपूर नींद अगर बच्चे लेते हैं तो उनकी मेमोरी अच्छी होती है. दूसरा, अभी ठंड के दिनों में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं, हम देखते हैं कि बच्चे सोफे पर बैठकर या बिस्तर में स्टडी कर रहे हैं. ये तरीका सही नहीं होता है. बच्चों को जो स्टडी करना है तो उनको एक स्टडी टेबल का होना बहुत जरूरी है. एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर वो स्टडी कर सके. ये बहुत जरूरी होता है. और जो सब्जेक्ट बच्चों को ईजी लग रहे हैं, जो चैप्टर्स ईजी हैं, उन चैप्टर्स को उसको मॉर्निंग में पहले पढ़ना चाहिए. जब वो मॉर्निंग में उनको तैयार करता है तो उसके दिमाग में, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है. किसी भी चीज़ को लेकर बच्चों को ये करना चाहिए कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करे, मतलब चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाए. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि मैं इसे बाद में कर लूँगा, बाद में फिर वो बाद में जब उनको बर्डन बढ़ जाता है तो ये एक स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती है. जब बच्चे को ये देखना चाहिए या स्टूडेंट को देखना चाहिए कि जब भी उसे लगे कि ये काम कंप्लीट कर लेना है या उसे कोई टॉपिक कर लेना है, तो उसको उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए. मेरा ऐसा मानना है.
है ना। और कभी भी दो सब्जेक्ट जैसे कि टफ सब्जेक्ट होते हैं, आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को साइंस में समस्या आती है और मैथ्स में समस्या आती है, तो साइंस और मैथ्स को एक साथ ना पढ़ें। कोशिश करें कि साइंस सब्जेक्ट के बीच में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जो ज़्यादा आपको थोड़ा कम कठिन लगता हो और जो है अच्छा लगता हो थोड़ा सा, क्योंकि साइंस और मैथ्स से बच्चे थोड़े से भागने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स के दबाव में लंबे टाइम तक बैठते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लंबे समय तक बच्चे ना बैठें, मैक्सिमम जो है वो एक घंटे की सिटिंग रखें और 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक बहुत जरूरी है। जब तक ब्रेक नहीं लेंगे तो माइंड रिफ्रेश नहीं हो पाता और फिर वो उनको याद नहीं रहता है, फिर वो बाद में बोलते हैं हमें याद नहीं रहता है। हाँ, अभी अभी कुछ देखने में आया, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, जैसे हम प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, तो वो बोलते हैं सर हम पढ़ते तो है पर जब स्कूल आते हैं या एग्जाम देने आते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। मैं यहाँ पर बच्चों को बताना चाहूँगा कि वे सुबह उठे या एक ट्रिक रखें कि सुबह उठकर वे बोले अपने आप से कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे सब याद रहता है। ऐसा है कि जब वो रात को सोने जाए तब भी वो इस तरह से कहें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे सब याद रहता है। ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है और मैंने इसको बच्चों पे आजमाया भी है। थैंक यू मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी दर्शक, खास तौर पर जो हमारे बच्चे कार्यक्रम देख रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी सर ने आप सभी के लिए यहाँ पर साझा की हैं, आप उन्हें ज़रूर नोट करेंगे। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस जब हम सुबह उठकर अपने आप से कुछ भी कहते हैं, कुछ वादा करते हैं और कहते हैं कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक दृष्टि से प्रभाव तो हमारे ऊपर ज़रूर डालती हैं। So moving ahead in the conversation, Kariyappa sir, we would like to know from you how we can develop or enhance our concentration skills, especially for the students that are preparing for their examinations. Yes, yes, madam. Actually, recently we have seen in a research study shows that if you spend long time on reading, in the sense if it is more than 90 minutes, if you continue reading, so that reading is not going to be meaningful. So if you see that and outputs of the research, we have seen that, in the sense, like earlier sir also said that, so between the study or between the learning activity, we need compulsory a break. So continuity is definitely threatening the concentration. So compulsory first, we need, as per the many studies, even recently we have seen that after pandemic, the concentration level of the student is not even 8 seconds. So it come down, even 8 seconds we are unable to concentrate on one thing. So definitely immediately our concentration is distracting to the some other thing. So please be aware about it, all the teachers and parents and everyone. So how to concentration is supporting means many things. It's not one or two factors are going to be support for the concentration among the children. So everyone is need to be aware about it. So just I would like to mention here, the one of the most important is the spend time in nature. So nowadays, I think due to the metropolitan cities or due to the developmental or due to the modernization, we are little going far about the nature. This is, we are having artificial nature. We are little far for the nature. So that's why if a students want to get more concentration, that's why the morning exercises, going for the nature walk, or spending time out of the room, in the sense out of the classroom or out of the house with the nature, is the most important. So definitely it is a biologically impact we can see among the every learners. If their concentration need to be an improve, surely there is a spend time in nature is most important. So we need to plan every exam preparation, or every learner, every student need to be aware about it, and need to be planned for to spend some time or some particular time to spend on nature. That would be definitely can sustain or it can retain the concentration level among the learners. So another important way we used to do that, the focus on important information. So normally while preparing or while preparation of the examination or while listening to the some classes, so when you are able to focus on important information, or like you can see that the art of information about the subject or art of information about the day, so if you are able to focus it, so definitely the concentration level will not distract. So when you are having less focus on that particular activity or particular learning system,
surely it distracts the concentration. So for if every learner or every exam preparer definitely need to be focus on what they are doing an activity or method important information. So for example, a person is preparing for a mathematics, so need to be concentration or need to be focus on what kind of formulas or what kind of steps are need to be followed, like such kind of. If an example, if you take about, like if a student is preparing for a social science, so like if the person is preparing for the math skills, so he need to be aware about each and every point, he has to be focused and need to be studied. So the focus is also a most important point, need to be aware about the concentration level is going to be improved among the learners. Next, another one is, so earlier already I said, taking regular breaks. So the while learning for a period, I think every 30 minutes or 40 minutes, at least 5 minutes break. In that break also should we have some kind of nature walk, just going out, breathe, long breath taking and living. Such kind of small kind of an activities, exercises is going to be support for the concentration level. Next, nowadays I think everywhere and everyone is going to talking about meditation technique, either early morning or in the evening or during the before going to study or before going to preparation of some activities. Surely the meditation technique is the most important technique which is increasing. You know, so many research studies are already proved that the meditation is the most important technique to increase the concentration level of students. So I think teachers and parents need to be give some space or some time and need to be train the students with the based on their meditation techniques. So some of the so many techniques are there, it's available in social media, it's available in everywhere. So every students need to be aware about some of the meditation techniques are the more supportive for the improvement of the concentration level of the students. Next, look for the better atmosphere. I think if all these things, if you talk, the most important thing is going to consider it is the where we are going to study, our setup of the study center, or otherwise the place where we are going to study, the atmosphere what we have around it. For example, so you know that so many people used to be keep many things on the table and they want to study, so that unorganized things is also distracting our activities. For example, if I have a 10 books, 10 books need not to be open. If I have want to read one book one by one, if it is properly arranged and properly kept, or proper lighting, ventilations, so like atmosphere speaks, or physical environment speaks everything. So it need to be a particular or a certain area is also a most important, because no, some students used to see that if I sit there, if I go to that room, I think I'm going to get good good kind of impression to study there. That's why the atmosphere is also the most important thing. Then another one important is study in advance. So normally, if you talk about exams, the many students used to be study many things before examinations. So that also be a some kind of distract or the concept, because no suddenly input is happening many things or many points or many information. Also automatically the capacity of holding the information is also a problematic. That's why no study in advance. If a preparation is in advance, definitely it won't be distract the concentration before or during an examination. Definitely it will be helpful for them. So if some people would like to have proper concentration level improves, surely in study in advance related to the subject or examinations will be the good technique for them. Another one is give the least priority to the entertainment. Surely when we take the breaks, we should take some kind of smoothing music or listening to the songs. So but what kind of song should be listened, or what kind of video should be watched, or what kind of entertainment should be taken has to be planned. Or otherwise simply, for example, while you are studying in a mathematics, some like which is the modern music, if you start listening, definitely it is distract. So we don't want to see that. Let's prioritize the entertainment in the sense, try to minimize whichever distracting your mind activities. So such kind of an entertainment activities, if you find in a break, surely the concentration improvement we can see among the heavy learners. So then when you come to that, make time for exercises, some of the physical activities. So sitting for a long in a one kind of stretcher is also going to be a problematic. So it cannot be leave the means a long time physical activities sitting in a one posture is also a question mark.
So when it is also distract the concentration. So that's why sometimes we need to be walk and read, or sometimes sit and read, and proper sitting arrangements is required. That's why. So take time for exercises. What kind of exercises is required? Which can is like taking a long breath and giving such kind of an yogistic or meditational activities, some kind of physical activities are also most importantly helps to improve the concentration level of the learner. So please, the parents and even teachers and everyone need to be train or need to be guide and need to be instruct them. So what kind of, and we should also aware about it, what how long the people are, how long they are going to prepare, how long they are going to be training in that situation. So if you are able to concentrate in the timings, if they are taking breaks, definitely all these some of the techniques may help every learners to improve their concentration level. Yes, madam. Thank you for mentioning those important areas for all our viewers on how they can enhance their concentration power, which might be very helpful during their examinations. तो जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमेशा हमारे बच्चों के जहन में चलती रहती है वो ये है कि किस तरह से बेहतर मार्क्स स्कोर किए जाएं। अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हम एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स भी लेकर आएँ। मुझे लगता है कि ये एक सवाल हमेशा ही हमारे बच्चों के जहन में बना रहता है। हम कैलाश सर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके माध्यम से हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें ही, साथ ही एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएँ? और सर सत्र में केवल 2 से 3 मिनट का समय हमारे पास शेष है, तो मैं चाहूँगी जी बहुत बिल्कुल जल्दी से इस मामले में बात जी करना चाहूँगा। जी बहुत जरूरी है, हम पूरे साल जब बच्चा तैयारी करता है पढ़ता है तो हम आखिरी में उसकी ग्रेड से या नंबर से इसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे जो है एनसीईआरटी पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, जो एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उन्हीं को पढ़ें और उनमें से ही जनरल इनके पेपर्स तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको लें और उनको सॉल्व करें और खुद इवेल्युएट करें कि वो कितने समय में उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और आजकल क्या हुआ, नया पैटर्न है जिसमें 20 मार्क्स जो एमसीक्यू के आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए बच्चों को फॉर्मूलाज जो मैथ से या साइंस से रिलेटेड है उसके चार्ट्स बना लेना चाहिए और घर पर अपने अपने रूम में पेस्ट कर लेना चाहिए, कहीं लगा लेना चाहिए, चिपका लेना चाहिए उनको। और जहाँ तक हो सके सोशल साइंस से रिलेटेड डेट्स हैं या सोशल साइंस से रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको भी वो लिख लें। जब बार बार बच्चे उसको देखेंगे तो उनको याद रहता है। और मैं अब आगे की ओर ले जाता हूँ बच्चों को, जब वो एग्जामिनेशन डेज आते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले ऐसा मत सोचे कि रात भर तैयारी करेंगे और सुबह एग्जाम दे देंगे, ये बहुत हो नहीं पाता है। इसलिए जो बच्चे पूरी नींद लें और एग्जाम के दौरान जो है मोबाइल से दूर रहें, सोशल मीडिया का यूज कम से कम करें। और हमने जब एग्जामिनेशन ड्यूटी की है मैडम यहाँ पर 10th और 12th क्लासेस में, तो हमने देखा कुछ बच्चे जब एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आ जाते हैं तो वो अपना रोल नंबर घर भुलाते हैं। आप एक दिन पहले ये पूरी तैयारी कर लें, आपके रोल नंबर, आपके जो ट्रांसपेरेंट पाउच वगैरह जो भी रखना है आपको कल के लिए पूरी तैयारी एक दिन पहले हो जाना चाहिए। दूसरा, आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो आप 15 मिनट्स पहले पहुंच जाएं ताकि आप वहाँ रिलैक्स रहें और बिल्कुल शांत रहें। वहाँ पर आप ऐसा ना करें कि दोस्तों में मस्ती करने लगे। और जब आप एग्जामिनेशन देना शुरू करते हैं तो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आप रीड कर सकते हैं पेपर को। आप जो है क्वेश्चन पेपर को रीड करें और जो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं उनको टिक कर लें पहले, ये बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में राइटिंग अपनी क्लियर रखें, अच्छी हैंड राइटिंग लिखने की कोशिश करें और अननेसेसरीली किसी भी क्वेश्चन को इलैबोरेट ना करें, बहुत लंबा लिखने की कोशिश ना करें। और अगर इन ट्रिक्स को बच्चे यूज करते हैं तो वो अच्छे ग्रेड्स ला पाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि ये जो जानकारी आपने हमारे साथ साझा की हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत हेल्प करने वाली है उनके एग्जामिनेशंस के दौरान। आई वुड लाइक टू थैंक करियप्पा सर एंड कैलाश सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन and sharing your valuable insights with all our viewers. Thanks a lot. Thank you very much. So discussing about examinations, we have another information for all of you. So you all know that in yet another exciting edition of Pariksha Pe Charcha, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will interact with students, teachers and parents on 27th of January 2023. So let's listen to the experiences of our Honorable Prime Minister और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तनाव रहित होकर
अपनी परीक्षाओं को एक उत्सव की तरह हम कैसे मना सकते हैं, हाउ वी कैन cherish and celebrate them. You can watch the live telecast of Pariksha Pe Charcha on all the 12 channels of PM eVidya. Also on Doordarshan and All India Radio, including various other channels. So thanks a lot to all the viewers who have connected with NCERT for this particular session of Sahyog. Now it's time for me to wrap up this interaction. But stay connected and keep watching eVidya channels and take a very good care of yourself. And all the best to all the students who will be appearing for the examinations in the near future. Namaskar.